ओंकारबिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामदं मोक्षदं तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जंदारु ब्रह्ममूर्ति प्रणवतनुधरं सर्ववेदान्तसारं भक्तानां कल्पवृक्ष भवजलतरणी सर्वतत्त्वानुतत्त्वं योगिनां हंसतत्त्वं हरिहरनमितं श्रीपति वैष्णवानां शैवानां भैरवश्च पशुपति परमशक्तितत्त्वं च शाक्तं बौद्धानां बुद्धसाक्षात् ऋषभजतिवर जैनसिद्धान्तसारं तं देव पातु नित्यं कलिकलुषहरं नीलशैलाजिनाथम्। अथ श्रीमद्भागवत महापुराण षष्ठ स्कंध नवमोऽध्याय। विश्वरूप बध वृत्रासुर हाथरे देवता मानकर पराजय एवं भगवान को प्रेरणा देवता मानकर दधीचि ऋषि निकटक गमन। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतं द्रवसंयुतं पिबतं भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुकाः। श्रीशुक उवाच तस्यासन् विश्वरूपस्य शिरांसि त्रीणि भारत सोमपीठं सुरापीठम् अन्नाद्रिमीति शुश्रुमः। स वै बर्हिषि देवेभ्यो भागं प्रत्यक्षमुच्यते अवदत् यस्य पितरो देवाः सप्रश्रयं नृप। स एव वै ददौ भागं परोक्षम् असुरान् प्रति यजमानोऽपहत् भागं मातृस्नेहवशानुगः। तद्देवहरणं तस्य धर्मालेकं सुरेश्वर आलक्ष्य तरसा भीत तस्यार्षिरचिनन्सा। सोमपीठं तु यत्तस्य शिर आसीत् कपिञ्जरः कलविङ्क सुरापीठम् अन्नादं यत् स तित्तिरिः। ब्रह्महत्यामञ्जलिना जग्राह जदपीश्वरः संवत्सरान्ते तदघं भूतानं स विशुद्धये। भूम्यमुद्रुमजोषित्य चतुर्धा व्यभजत् हरिः। भूमिस्तुर्यं जग्राह खातपुरवरेण वै ह्रीणं ब्रह्महत्यायां रूपं भूमौ प्रदृश्यते। तुर्यं छेदविरोहेण वरेण जगृहुर्द्रुमा तेषां निर्जासरूपेण ब्रह्महत्या प्रदृश्यते। शश्वत्कामवरेणामः स्तूर्यं जगृहुः स्त्रिय रजोरूपेण त्वातास्मो मासी मासी प्रदृश्यते। द्रव्याभूयो वरेणाश्च स्तूर्यं जगृहुर्मलं तासु बुद्बुदफेनाभ्यां दृष्टं तत् हरति क्षिपन्। हतपुत्रस्ततस्त्वष्टा जुहावेन्द्राय शत्रवे
इन्द्रशत्रो विवर्धस्व मा चिरं जहि विद्विषम् अथान्वाहार्यपतना दुत्थितो घोरदर्शिन कृतान्त इव लोकानां जुगान्त समये यथा विश्वविवर्धमानं तमिश्रुमात्रं दिने दिने दग्धशैलप्रतीकाशं सन्ध्याभ्राणीकवर्चसं तप्तताम्रशिखाश्मश्रुं मध्याह्नार्कोग्रलोचनं देदीप्यमाने त्रिशिखे शूलवारोप्य रोदसी मृत्यन्तम् उन्मदत्नं च जालयन्तं पदामहिम् दरी गम्भीरवक्त्रेण पिबता च नभस्थलं लिहता जियोयर्षाणि ग्रसता भुवनत्रयम् महता रौद्रदंष्ट्रेण कुम्भ्रमाणं मुहुर्मुहुः वित्रस्ता दुद्रुवुर्लोका वीक्ष्य सर्वे दिशो दश येनावृता इमे लोका तमसा त्वाष्ट्रमूर्तिना स वै वृत्र इति प्रोक्तः पापमरमदारुणः तं निजघ्नुरभिधृत्य सगुणा विबुधर्षभा स्वैर्दिव्यास्त्र शस्त्रौघौ सोऽग्रसक्तानि कृष्णसः ततस्ते विस्मिता सर्वे विसर्णाग्रस्ततेजस प्रत्यञ्चम् आदिपुरुषम् उपतस्तु समाहिता देवा ऊचुः वायुम्बराग्नपक्षितस्य स्त्रीलोका ब्रह्मादयो ये भयमुद्विजन्त हरामजस्मै बलिमन्तकोऽसौ बिभेति तस्मात् शरणं ततो नमः अभिस्मितं तं परिपूर्णकामं स्वेनैव लाभेन समं प्रशान्तं विनोपसर्पत्य परं विवाडिस स्वलाङ्गुलेनातितीर्थसिन्धुम् जस्योरुशृङ्गे जगतिं स्वनावं मनुर्यथा बद्धतरा ततारदुर्गं स एव नस्तष्ट्रभयाद्दुरन्तात् त्राताश्रितान् वारि सरोऽपि नूनं पुरा स्वयंभूरपि संयमाम्भ स्युदीर्णवातुर्मिरवैकराळे एकोरविन्दात् पतितस्ततार तस्मात् भयाद्येन स नोऽस्तु पार ज एको ईशो निजमायया न ससर्जतेनानुसृजाम विश्वं वयं न यस्यापि स्फुरः समिहितः पश्याम लिङ्गं पृथगीशमानिनः जो न सपत्रैर्वृषमर्जमानान् देवर्षतिर्यं वृषनित्य एव कृतावतारस्तनुभिः स्वमाया कृत्वात्मसात्पाति जुगे जुगे च तमेव देवं वयमात्मदैवतं परं प्रधानं पुरुषं विश्वमन्यं व्रजाम सर्वे शरणं शरण्यं स्वानां सनोधास्यति सम्मात्मा श्रीशुक उवाच इति तेषां महाराज सुराणामुपतिष्ठतां प्रतीत्यां दृष्टभुजाभिः शङ्खचक्रगदाधर आत्मतुल्यैः षोडशभिर्विना श्रीवत्सकौशभैः पर्युपासितं निद्र दशरथुम्बुरोहेक्षणं दृष्ट्वा तमवनौ सर्व ईक्षणाह्लादिविक्लवः दण्डवत् पतिता राजन् नैरुत्थाय तुष्टुः देवा ऊचुः नमस्ते यज्ञवीर्याय वयसे उत ते नमः नमस्ते हस्तचक्राय नमः सुपुरुहृदये जत्ते गतीनां तृष्णाम् इषितुः परं पदं नर्वाचिनो विसर्गस्य धातुर्वेदितुमर्हति ॐ नमस्ते भगवन्नारायण वासुदेवादिपुरुष महापुरुष महानुभव परममङ्गल परमकल्याण परमकारुणिक केवल जगदाधार लोकैकनाथ सर्वेश्वर लक्ष्मीनाथ परमहंस परिव्राजकै परिमीणात्मयोग समाधिना परिभावित परिस्फुट पारमंस धर्मिणोद्घाटित तमः कपाटद्वारे चित्ते पावृत आत्मलोके स्वयं उपलब्ध निजसुखानुभवो भवान् दुरवबोधैव तवायं विहारयोग जतशरणो शरीर इदमनवेक्षितास्मत्समवाय आत्मनैवाविक्रियमाणेन सगुणम् अगुणः
सृजसि पासि हरसि अथ तत्र भवान् किं देवदत्तवदिह गुणविसर्गपतित पारतन्त्रेण स्वकृतकुशलाकुशलं फलमुपपाददात्याहोस्विदात्मारम् उपशमशीलः समञ्जसदर्शदर्शन उदास्त इति ह भावन विदामः न हि विरोध उभयं भगवत्यपरिगणितगुणगणे ईश्वरे नवगाह्य महात्मेर्वाचिन विकल्पवितर्क विचार प्रमाणाभास कुतर्क शास्त्र कलिलान्तकर करुणाश्रय दुरवग्रहवादिनां विवादानवसर उपरत समस्त मायामय केवल एवात्ममायाम् अन्तर्धाय कोऽन्वर्थो दुर्घट इव भवति स्वरूपदयाभावात् समभिसम्मतिनां मतमनुसरसि यथा रज्जुखण्ड सर्पादिधियां स एव हि पुनः सर्ववस्तुनि वस्तुस्वरूपः सर्वेश्वरः सकलजगत्कारणकारणभूतः सर्वप्रत्यगात्मात्वात् सर्वगुणभासोपलक्षित एक एव पर्यवशेषितः अथः वाव तव महिमामृत रससमुद्रविप्लुषा सकृदवल्या स्वमनसि निस्सन्द्य मानावमानान् अनवरत सुखेन विस्मारित दृष्टश्रुत विषय सुखलेशाभासः परमभागवता एकान्तिनो भगवति सर्वभूतप्रिय सुहृदि सर्वात्मनि नितरां निरन्तरं निर्वृत्तमनसः कथमुह वा एते मधुमथन पुनः स्वार्थकुशला ह्यात्मप्रिय सुहृद साधवस्त्वचरणारम्भुज जानो सेवां विसृजन्ति न यत्र पुनरयं संसार पर्यावर्तः त्रिभुवनात्मभवन त्रिविक्रम त्रिनयन त्रिलोक मनोहरानुभाव तवैव विभूतयो द्विजतनुजादयाश्चापि तेषाम् अनुपक्रम समयो अयम्भिति स्वात्मवायया स्वर नर मृग मिश्रित जलचराकृतिभिर्यथा पराजं दण्डं दण्डधरं तदर्थम् एवं येनमपि भगवञ्जहि त्वाष्ट्रमुत यदि मन्यसे अस्माकं तावकानां तव नतानां तत ततामह तव चरणनलिनजुगल ध्यानानुबद्ध हृदयनिगडानां स्वलिङ्गविवरणेनात्मसात् कृतानाम् अनुकम्पानुरञ्जित विशद रुचिरशिशिरस्मितावलोकन विगलित मधुर मुखरसामृतकलया चान्तस्तापमन घार्हसि समहितुम् अथ भगवंस्तवस्माभिरखिलजगत् उत्पत्तिस्थितिलय निमित्तायान दिव्यमाया विनोदस्य सकलजीवनिकायानाम् अनन्तहृदयेषु बहिरपि च ब्रह्मपत्या प्रत्यागात्मस्वरूपेण प्रधानरूपेण च यथा देशकालदेहावस्थानविशेषं तदुपादानम् उपलम्भोक्तयानुभवतः सर्वप्रत्ययसाक्षिण आकाशशरीरस्य साक्षात् परब्रह्मण परमात्मनः क्रियानीह वा अर्थविशेषो विज्ञापनीय स्यात् विस्फुलिङ्गादिभिरिव हिरण्यरेतसः अत एव स्वयं तदुपकल्पयास्माकं भगवतः परमगुरोस्तव चरणशततल शतपलाशछायां विविधवृजिन संसार परिश्रमोपशमनीम् उपसृतानां वयं यत्कामेनोपसादितः अथो ईश जहि त्वाष्ट्रं ग्रसन्तं भुवनत्रयं ग्रस्तानि येन नः कृष्ण तेजां शस्त्रायुधानि च हंसाय दह्रनिलयाय निरीक्षिकाय कृष्णाय मृष्टजशसे निरुपक्रमाय सत्संग्रहाय भवपन्थनिजाश्रमास्ता वन्ते परिष्टगतये हरये नमस्ते हंसाय दह्रनिलयाय निरीक्षकाय कृष्णाय मृष्टजशसे निरुपक्रमाय सत्संग्रहाय भवपन्थनिजाश्रमाप्ता
वन्ते परिष्टगतये हरये नमस्ते। श्रीशुक उवाच अथैव मिलितो राजन् सादरं त्रिदशैर्हरिः समुपस्थानमकाराकर्ण्य प्राहतानभिनन्दितः। भगवानुवाच प्रीतोऽहं वः सुरश्रेष्ठा मदुपस्थानविद्यया आत्मैश्वर्य श्रुतिपुंसां भक्तिश्चैव जया मयि। किं दुरापं मयि प्रीते तथापि विबुधर्षभा मयेकान्तमतिर्नान्यन् मत्तो वाञ्छति तत्त्वभिः। न वेद कृपणः श्रेय आत्मनो गुणवस्तुदृक् तस्य ताननिच्छुतो गच्छेत् यदि जोषोऽपि तथाविधः। स्वयं निःश्रेयसं विद्वान् न भक्त्या ज्ञानकर्म हि न रातिरोगिणोपत्यं वाञ्छतो हि विषक्तमः। मघवन् जातभद्रं तो दध्यं च मृषसत्तमं विद्याव्रत तपःसारं गात्रं जाततमाचिरम्। स्वबाधिगतो दध्यं अंगश्रीभ्यां ब्रह्मनिष्कळं जद्वा अश्वशिरो नाम तयोरोमरतां ददात्। दध्यं थर्थर्बाणस्वष्ट्रे वर्माभेद्यं मदात्मकं विश्वरूपाय यत्प्रादात् त्वष्टा यत्र त्वमाधस्तः त्वं धास्ततः। जुष्मभ्यं जातितोऽश्विभ्यं धर्मज्ञोऽङ्गानि दास्यति ततस्तैरायुधश्रेष्ठो विश्वकर्म विनिर्मितः। येन वृत्र शिरोहर्ता मत्तेज उपबृंहति तस्मिन् विनिहते जुह्यं तेजोष्ट्राय सुसम्पद भूय प्राप्स्यथ भद्रं वो न हिंसन्ति च मत्परान्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे नवमोऽध्यायः। भीमस्यापि रणे भङ्गो मुनेऽपि मतिभ्रमं यदि शुद्धम् अशुद्धं वा मम दोषो न विद्यते। श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु।